माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी। बेसिकली ये जो पावर पॉइंट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक पैकेज में आता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एप्लीकेशन जो है वो कैसे स्टार्ट करनी होती है, पहला क्वेश्चन ये है। और करेक्ट आंसर है click on and the options are click on start programs, all programs, Microsoft PowerPoint, hit Ctrl plus R, then type the ppoint.exe and enter, click start, run, then type PowerPoint, then press enter or all of the above, and the correct answer is third. Click start, go to the run and type power POWERPNT and then press enter. This is the fastest way to access Microsoft PowerPoint application, right? Question number 2. Which shortcut key insert a new slide in current presentation? Control plus N, Control plus M, Control plus S or all of the above? And the correct answer is Control plus M, right? आपने मुझे पता है कि आपने सोचा Control plus N, बट नहीं, इसमें Control plus M होता है। Question number 3. To start slideshow of a presentation, hit F5 key. From slideshow menu, show view show options. From slideshow menu, choose rehearse timing. Both A and B. Option are both A and B, right? हम F5 दबाते हैं तो अभी हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4. What are the view options provided by PowerPoint to look at and modify presentation? Normal, slideshow, slide short, all of the above, and the answer is all of the above. Question number 5. The selected design template can be applied to current slide only, to all slides, or to all the new presentation you create, or all of the above? And the correct answer is all of the above, right? Question number 6. What PowerPoint feature will you use to apply motion effects to different objects of a slide? Slide transition, slide design, animation objects, animation scheme. And the correct answer is animation scheme. Question number 7. Slide sorter of PowerPoint is available on which menu? Insert, file, view or slideshow? Option, and the correct answer is view. Question number 8. How can you stop a slideshow? Press the right arrow, press escape, press the left arrow, press the down arrow, and the correct answer is press escape, right? Question number 9. To open the existing presentation, press Control plus L, Control plus N, Control plus A or Control plus O, and the correct answer is Control plus O, right? क्वेश्चन नंबर 10. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अप्लाइड डिजाइन टेम्पलेट डू? अप्लाइड डिजाइन टेम्पलेट क्या करता है पीपीटी के अंदर या प्रेजेंटेशन में या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? चेंजेस द कंटेंट ऑफ द स्लाइड, एड्स फंक्शनैलिटी टू द स्लाइड, चेंजेस द लुक ऑफ द स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, none of the above. And the correct answer is changes the look of the slide without changing the content.